टू 30/11/23, यानी 17 अक्टूबर 23 से 30 नवंबर 23 तक पूरी कंट्री में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी एडिशन कराना है, डिलीशन कराना है, कोई भी नाम में मॉडिफिकेशन कराना है, एवरीबडी इज वेलकम टू डू दिस आइदर थ्रू BLO और थ्रू दी वोटर हेल्पलाइन BHA application. You can directly do this. So I would appeal through you to everybody to kindly make these changes. Friends, now coming to the polling stations, there would be 1.77 lakh polling stations in these 5 states, and of which 1.01 would have webcasting facility. We have prescribed 50% webcasting, and with a liberty to the states on the basis of vulnerabilities to increase it on their own. So this would be close to 1.01 lakh. Then all this would be monitored through the control rooms, and the number of women managed polling stations there would be 17,734 polling stations which will be model polling stations. There would be PWD managed polling stations, 621, and women managed would be 8,192, more than one in most of the constituencies. Coming to the assured minimum facilities, every polling station would have toilet, drinking water, ramp, लाइट, हेल्प डेस्क, साइनेज, सभी पोलिंग स्टेशंस पे सुविधा होगी. और प्रयास यह है कि पहले आपको पूरी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल करें. शामिल करने के बाद आपकी जो वोटिंग एक्सपीरियंस है पोलिंग स्टेशन पे, उसको भी और सहज और सुगम बनाएं, और उसको ये भी माध्यम बनाएं कि सोसाइटी में PWDs, ट्रांसजेंडर, वुमेन, ओल्ड एज, सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक थ्रू दी मीडियम ऑफ द वोटिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, and entire we showcase and we put an example before the society that yes, at the polling station when we can do this respect and the separate treatment for them which is their due, why can't we do it elsewhere in the society? So this is our modest effort to bring this fact into the limelight. Coming to the elderly voters, as you know, in all these states also, they will have the facility to vote from their home. फॉर्म 12D 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है स्लाइड जो आपको दिखाना था. बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर हम लोग अंदर जा रहे हैं ताकि हर वोटर के पास पहुंच सकें. अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखेंगे, ये फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन है. 8 किलोमीटर इससे बचेगा चलना. जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़, दिस इज दोज एरियाज. सिमिलरली इन राजस्थान, दिस इज ऑल्सो न्यू बूथ. तो एक स्पेशल कोशिश है कि जो लोग को कम से कम चलना पड़े. वैसे भी हमारा नियम है कि 2 किलोमीटर के अंदर में हम देंगे, बट जहां पॉसिबल नहीं था वहां भी हम भर रहे हैं. इसी प्रकार से जो हमारे, मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए भी हम स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना रहे हैं. बफर जोन ऑफ फैन के अंदर में ये पोलिंग स्टेशन होगा, जो कि मांडला MP में, जस्ट दी शोकेसिंग. और अगर आप नेक्स्ट वाला देखें, पिपरिया डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा MP, इसमें 165 kilometers from district headquarters, tribal dominated district. People will go, and this is the kind of rivers and all terrain they will cross. This is in Mizoram, 22 non-motorable polling stations. तो ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा है कि जो पोलिंग पर्सनल हैं वो कितनी मेहनत से, कितनी दूर में अपना ड्यूटी करने जाते हैं. और 6 महीने की तैयारी सिर्फ इसीलिए है जिससे कि सबको सुविधाएं मिल जाएं. और इसीलिए आई विल लाइक टू अपील थ्रू यू टू ऑल दी वोटर्स ऑफ दीज 5 स्टेट्स कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी कम से कम वोट देने के लिए जरूर आएं. स्पेशल रिक्वेस्ट टू यूथ, विमेन एंड दी पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, दोज वेयर वी सी अ लिटिल एपैथी. फ्रेंड्स, आपको पहले भी ये बताया है हमने कि सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट की.
और जिसके पास हम 100 मिनट में पहुंचेंगे। और इसका प्रयोग में रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में हमें काफ़ी शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है। नो योर कैंडिडेट्स, ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना, क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था। Once they give this information, it is for the voter to decide on the basis of an informed choice as to what he wants to do. Another new initiative we have taken is on the integrated election expenditure monitoring. कुछ समय पहले, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम सोचते हैं हमें मिलेंगे, और ये एक ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए नया इनिशिएटिव है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है कि उन्हें कहां से कितने पैसे मिले, और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है। तो पीछे देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ सूचनाएं समय पर भी नहीं आती थी, और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी। तो इन सभी चीज़ों को भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए नाउ न्यू IT सिस्टम हैज बीन स्टार्टेड, and in which the contribution report which is due of every year by 31st October would have to be filled. Similarly, annual audit reports political parties को अब इसी IT tools में डिजिटल मोड में देनी पड़ेंगे, और एक और रिपोर्ट उन्हें देनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज को आफ्टर एवरी इलेक्शन, जिसमें वो रिपोर्ट 30 दिन के अंदर देनी होती है जैसे ही चुनाव खत्म हो, और 75 डेज के अंदर में फाइनल रिपोर्ट, ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया। तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा। दिस विल हेल्प इन ईज फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू फिल अप दिस डिटेल्स ऑनलाइन, एंड वुड ऑल्सो हेल्प अस in keeping it at one place and do whatever assessment and analytics is possible in addition to housekeeping. Similarly, जो इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस का फोकस चुनाव आयोग और गंभीरता के साथ दे रहा है, उसके लिए भी एक इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम इस बार नया शुरू किया जा रहा है इन 5 असेंबली इलेक्शंस में। व्हाट इज दिस? जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस देते हैं, जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू द शेड्यूल, कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए। डोंट वर्क इन साइलोज, work in a coordinated manner, but it doesn't get coordinated often. So this system will give an access, will onboard all the central and state enforcement agencies during the election period, and they will have to report as soon as any action they take. And if they don't fill up, it will also tell us that for so long no action has been taken by a particular agency. This will also help us in compiling, do the trend analysis, do various kinds of things possible in that particular state. और आप सब अवगत हैं कि हर स्टेट के बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं। अगर मिजोरम में इंटरनेशनल बॉर्डर है तो राजस्थान में भी वही इशू है, तो कहीं पर इंटर स्टेट ड्रग्स की प्रॉब्लम है, तो कहीं पर एक्सेस कैश और मनी पावर की प्रॉब्लम है। All that with the help of the respective enforcement agencies would get collated, and we hope would also get analyzed on a far more real-time basis, so that we can take corrective actions and we can nudge them or we can appreciate them. In this reference, we have got some check post established, which is in Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana, in all 940 check posts. These 940 check posts belong to different enforcement agencies, which is namely, by and large, police, state police, excise, commercial taxes, forest and transport. तो
तो इन सब पांचों की जो पावर्स हैं वो अपने अपने एक्ट के अंदर में अलग अलग पावर्स हैं. नाउ व्हाट वी हैव डायरेक्टेड देम टू डू ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, रिस्क, आई मीन पूल देयर रिसोर्सेज, एस्टैब्लिश सिनर्जीज. पांचों एक साथ मिलकर काम करें. और क्या काम करें? इन 940 प्लस चेक पोस्ट पर इंटरस्टेट बॉर्डर्स में दे विल कीप ए वेरी स्ट्रांग वॉच, एंड वी हैव ऑलमोस्ट टोल्ड देम टू ड्राई अप इनफ्लो ऑफ कैश, लीकर एंड ड्रग्स. आपको जब पिछले कर्नाटका इलेक्शन हुआ तो वहां जाने के बाद जब हम रिव्यू करके आए तो जो 2018 का सीजर था वो एमसीसी अनाउंस होने तक उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कर दिया था. सो दिस इज ए रिन्यूड फोकस, एंड all the checking of cargo movement through non-scheduled chartered flights. This we will issue the guidelines also in greater detail. ऐसी संभावना होती है कि जो पैसेंजर्स के अलावा कार्गो मूवमेंट्स है उसमें भी कुछ ना कुछ इन पोल बाउंड स्टेट्स में कोई मटेरियल इंड्यूसमेंट के थ्रू जा सकता है. कार्गो के पार्सल्स का रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भी चेकिंग शुरू हो. Money Power, all these agencies have been strictly asked to keep strict vigil and report in the system which we have stated just before this. Number of observers will be deputed, the general observers, police observers and the expenditure observers, and adequate CAPF. Similarly, the directions again, at the polling stations, wherever necessary, we will keep the female staff to check impersonation. We will keep polling parties to move only in the official vehicles, ताकि जैसे पिछले चुनाव में एक आध जगह एक प्राइवेट व्हीकल में बैठ गए थे उस तरह की घटना ना हो. ये भी कहा गया है स्पेसिफिकली कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम, ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें, एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें, so that people can know which booth, which place. Though we request them to check that much in advance on the voter helpline app. नया एक और चेंज इस बार किया गया है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस विच वी हैड इन सर्टेन स्टेट्स. जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता था, और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी बाई पोस्ट भेज सकते थे टिल दी date of counting. That's the standard practice for the postal ballot. It has been changed now. ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं, बिकॉज मार्जिन्स बहुत कम होते हैं. तो अगर 100, 200, 400 लोग भी मिल जाएं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो दिस कुड बी ए पोस्ट पोल opportunity for some to influence the voters or influence the results. Therefore, all of them now onwards in all the elections will vote only at the facilitation center when they come for training. This is before, so this will be physically collected, and the postal ballot facility is available in the same sense but at the facilitation center. Next, now coming to friends, after mentioning that we are focusing far more on the inducement free elections because money power is one thing which we want to restrict, we now will come to the schedule which you are awaiting state by state. And now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all the states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in two phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh,
and date of poll would be 7th November. So first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you for those detailed remarks, sir. Just hold on. Floor is open for questions. Don't stand up. Just keep sitting and just put up your hands, and I'll direct the mic to come to you. ये पांचों स्लाइड्स की डेट वैसे अभी आपको भेज दिया होगा. So it's being tweeted to you. इट्स बीइंग ट्वीटेड, बट हम दोबारा रिपीट कर दीजिए. Yeah. मिजोरम विजिबल टू ऑल. नेक्स्ट मध्य प्रदेश, डेट ऑफ पोल 17th November. राजस्थान 23rd November એન્ડ તેલંગાના. તો આખરે 5 રાજ્યોની અંદર વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ ચૂકી છે. મધ્યપ્રદેશની વાત કરવામાં આવે, મધ્યપ્રદેશની અંદર આખરે ચૂંટણીની તારીખ જાહેર થઈ ચૂકી છે. આ ઉપરાંત છત્તીસગઢ, મિઝોરમ, રાજસ્થાન તમામની અંદર ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ ચૂકી છે. તમામનું પરિણામ 3જી ડિસેમ્બરે એટલે કે પાંચેય રાજ્યોની મતગણતરી 3જી ડિસેમ્બરે થઈ જશે. મધ્યપ્રદેશમાં એક જ તબક્કામાં 17 નવેમ્બરે ચૂંટણી યોજાઈ જશે અને 3જી ડિસેમ્બરે હશે આખરે પરિણામ. રાજસ્થાનમાં 23 નવેમ્બરે એક જ તબક્કામાં ચૂંટણી યોજાશે અને પરિણામ હશે 3જી ડિસેમ્બરે. મિઝોરમમાં 7મી નવેમ્બરે મતદાન થશે. ઇલેક્શન કમિશને આ તારીખ પણ સ્પષ્ટ કરી દીધી છે. ખાલી છત્તીસગઢમાં 2 તબક્કામાં ચૂંટણી યોજાનારી છે અને ત્યાં પણ આખરે 2 અલગ અલગ તબક્કામાં જે ચૂંટણીની તારીખો છે તે જાહેર થઈ ચૂકી છે, 7 નવેમ્બર અને 17 નવેમ્બર. તો આખરે 5 રાજ્યોની અંદર ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ ચૂકી છે. સાથે 5 રાજ્યોની અંદર આજથી આચારસંહિતા લાગુ થઈ ગઈ છે. તો 5 રાજ્યોમાં 3જી ડિસેમ્બરે પરિણામ આવી જશે એટલે કે મતગણતરી જે છે તે 3જી ડિસેમ્બરે થતાની સાથે જ આખરે 5 રાજ્યોના પરિણામ સ્પષ્ટ થઈ જશે. તો સૌપ્રથમ મિઝોરમની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી અને તેમાં 7મી નવેમ્બરે મતદાન થશે. એક જ તબક્કામાં મિઝોરમની અંદર ચૂંટણી માટે મતદાન થઈ જશે. જ્યાં સુધી વાત છે છત્તીસગઢ, તેમાં 2 તબક્કામાં એટલે કે 7 અને 17 એમ 2 તારીખોની અંદર મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. મધ્યપ્રદેશમાં 7મી નવેમ્બરે જ આખરે ચૂંટણી સંપન્ન થઈ જશે, મતદાન સંપન્ન થઈ જશે. આ ઉપરાંત જે રાજસ્થાન છે તેમાં પણ એક જ તારીખની અંદર આખરે મતદાન પ્રક્રિયા થવાની છે. તો આપણે જણાવીએ કે 5 રાજ્યોની અંદર જે તારીખો છે તે જાહેર થઈ ચૂકી છે. સાથે 5 રાજ્યોની અંદર આજથી જ આચારસંહિતા લાગુ થઈ ચૂકી છે. આપણે જણાવીએ કે હાલ જે 5 રાજ્યોમાં જે વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો છે તે આખરે ઘોષિત થયા બાદ 3જી ડિસેમ્બરે 5 રાજ્યોના પરિણામ આવી જશે. તો ચૂંટણીના મેદાનમાં આ વખતે 2024 પહેલાં આ સૌથી મોટું ચૂંટણી દંગલ છે. સત્તાની આ સેમિફાઇનલ છે કે જ્યાં 5 રાજ્યોના પરિણામ આગામી લોકસભાની ચૂંટણીના પરિણામો પર પણ અસર કરતા હોય છે. અને એવે તબક્કે અહીં મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને છત્તીસગઢ તેની અંદર કોણ જીત મેળવે છે તેની પર સૌ કોઈની નજર રહેશે. તો આખરે મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન બંનેમાં એક જ તબક્કાની અંદર મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ચૂકશે. એટલે કે 7મી નવેમ્બરે જ્યાં આખરે છત્તીસગઢ અને સાથોસાથ અન્ય જગ્યાએ પણ મતદાન છે. છત્તીસગઢમાં 7 અને 17 2 અલગ અલગ તારીખની અંદર મતદાન થવાનું છે. આ ઉપરાંત મિઝોરમની અંદર પણ 7મી નવેમ્બરે મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જશે. એક જ તબક્કામાં મિઝોરમની અંદર આખરે મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાની છે. તો આપણે જણાવીએ કે છત્તીસગઢમાં આખરે 7 અને 17 નવેમ્બરે ચૂંટણી પ્રક્રિયા જે છે મતદાન પ્રક્રિયા તે પૂર્ણ થઈ જશે. રાજસ્થાનમાં 23 નવેમ્બરે એક જ તબક્કાની અંદર મતદાન થવાનું છે અને મધ્યપ્રદેશમાં પણ એક જ તબક્કાની અંદર મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે.
મધ્યપ્રદેશમાં 17 નવેમ્બરે આ મતદાન પ્રક્રિયા છે અને તમામ એટલે કે 5 રાજ્યોનું જે ચૂંટણી પરિણામ છે તે 3જી ડિસેમ્બરે જાહેર થઈ જશે. એટલે કે મતગણતરી 3જી ડિસેમ્બરે છે અને 3જી ડિસેમ્બરે જ આખરે બપોર સુધીમાં તમામ પરિણામો સ્પષ્ટ થઈ જશે. તો 5 રાજ્યોની અંદર ચૂંટણીનો જંગ જામશે અને સત્તાની આ સેમિફાઇનલ કહેવાશે, કારણ કે 2024ના જંગ પહેલા આ એક મહા મુકાબલો છે અને તેની અંદર કોણ જીત મેળવે છે અને તેની અસર 2024ની લોકસભા ચૂંટણી પર કેવી પડે છે તેની પર સૌ કોઈની નજર મંડરાયેલી રહેશે. તેના માટે આ વખતે મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, છત્તીસગઢ, મિઝોરમ આ તમામ રાજ્યોની અંદર જે ચૂંટણીના પરિણામો આવશે તે જાણવા ઘણા જ રસપ્રદ રહેશે. તેલંગાણામાં 30મી નવેમ્બરે ચૂંટણી યોજાવાની છે. તો 30મી નવેમ્બર એટલે કે 7 નવેમ્બરથી લઈને 30 નવેમ્બર સુધીમાં 5 રાજ્યોની અંદર જે મતદાનની પ્રક્રિયા છે તે પરિપૂર્ણ થઈ જશે અને 3જી ડિસેમ્બરે 5 રાજ્યોના પરિણામો સામે આવી જશે. એક છત્તીસગઢની અંદર 2 તબક્કાની અંદર મતદાન પ્રક્રિયા થશે, બાકી બધાની અંદર આખરે એક જ તબક્કામાં મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થનારી છે.